ଏଇଟା ଏବେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଅଛି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସ୍ପଞ୍ଜଟାକୁ ଏମିତି କାଟିବ। କାଟିଲା ପରେ ଏଇଟା କେମିତିକା ଦେଖାଯିବ? ଇନ୍ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡିନାଲ ସେକ୍ସନ ଆଫ୍ଟର dissection LS, longitudinal section. Substratum. Now this is the body wall of sponges. Body wall of sponges it is. The body wall containing the openings, the pores, these are the ostia. These are the opening. And these openings are called as your ostia. See this opening here. This is the opening. Okay. This is the opening and these are the body wall here. This is the body wall of the sponges. The body wall containing minute pores, and such pores are called as ostia. देखि पारुछ पिक्चर टाको body wall. Let me make the body wall clearly for you. Okay, fine. Sponge is now ready. My sponge is ready right now. Okay, see. So these cavities are called as what? Ostia. Eta kono? Substratum. And this single opening is called as osculum, and this cavity is called as spongocoel or paragastric cavity. Now the water from outside will enter into the spongocoel through. These are the entry of water entry. Water entry. Okay. So water from outside will enter the spongocoel through the ostia. Okay. Then from the spongocoel it will come out through the osculum. And this is a system of canals. This is a system of canals, and these small canals are called as ostia. This is the big canal, that is spongocoel, and this is the drainage is called as osculum. Outlet is called as osculum. So these openings in the sponge body will make a canal system. Remember, this canal system is the exclusive feature of the phylum Porifera. So canal system present in sponge body, present in sponges, is the unique feature, is the exclusive feature. Remember, ये जो कैनाल सिस्टम डा रही दिस इज यूनिक और एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ द स्पंजेस. ये सिस्टमटा कौन सी भी एनिमल ग्रुप्स रे तमे पाइब ना. इट इज ओनली फाउंड इन द फाइलम पोरिफेरा. इट इज एब्सेंट इन ऑल अदर एनिमल्स. सो इट इज एक्सक्लूसिव टू स्पंजेस, यूनिक टू स्पंजेस. And what are the components of the canal system? Ostia, spongocoel and the osculum. The components here, the components of canal system. What are the components? Ostia, spongocoel
and osculum ବୁଝିହବ ଓଷ୍ଟିଆଟା ହେଲା ତମର ଇନଲେଟ୍ osculumଟା outlet spongosil is the storage purpose. So water will enter into the spongosil through ostia. Water moves from the spongosil through osculum. Ostias are many, osculum is single. Single टा ହେଇଥିଲେ ଆକୁ ଆମେ ostium କହିଥାନ୍ତି ଯୋଉଠି ଥିବ that is single. Osculum single. Ostium single. But here ostia means the name itself indicates these are many in number. So many entry, one exit. That means definitely some of the materials are stored. तो जति की एंट्री करिवो सेति बाहरी पारुनी ना सो किछि स्टोरेज हम बुझबाले. सो डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो डायरेक्शन देखेबा डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो को डायरेक्शन वाटर फ्लो देख तार डायरेक्शन टा केमिति कहबो direction of flow of water that is outside ରୁ କୋଉଠି ଆସିବ ଓଷ୍ଟିଆ ରୁ କୋଉଠି ଆସିବ ସ୍ପଞ୍ଜୋସିଲ୍ କୋଉଠିକି ଯିବ osculum ରୁ ପୁଣି କୋଉଠି ଯିବ outside. This is the direction of the flow of water. So water from outside source will enter into the spongosil. ଗୋଟେ force generation ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି osculum ଭିତରେ ଦେଇକିରି ପୁଣି ବାହାରିକି ପଳାଉଛି. So this flow of water ostia spongosil osculum again ostia spongosil osculum पुणी एमती चलती कि नहीं. सो ये सिस्टम टाक आम कौन कहवा कैनाल सिस्टम. So what is the function of this canal system? Okay, so the purpose of this canal system is, the objective of this canal system is, देखो केमिति होउछ यार पर्पस कौन फंक्शन कौन फंक्शंस ऑफ कैनाल सिस्टम functions of canal system. प्रथम कथा आला sponges are animals. As you know, all animals are heterotrophs. Animals cannot prepare their own food. They are not autotrophic. The animals are heterotrophic, and they have to depend on other for the food. Sponges cannot go. Sponges cannot move to the food. तो ये तो फोड पाक को जाई करी आनी परिबनी. तो आ पाक को फोड आसीबा दरकार. केमती फोड आसीबो? Where the fods are present? The nutrients are present in the sea water. Nutrients जो ये खाई बसरा कोठी sea water. Sea water is the site, it is the resources of the nutrients. It contains different kinds of nutrients. So से nutrient गुड़ाक आ भितर केमती आसीबो जदि पानी आ भितर को पसिबो, because the nutrients are dissolved in the water. So definitely for getting the nutrition there must be the entry of water. तो nutrition पाई पानी आ भितर को पसिबा दरकार. केमती पसिबो? थ्रू द ostia. ostia रे पसिबो. Now प्रथम कथा हला gathering of the food. Canal system रो प्रथम काम कोन हला food gathering. Food gathering केमती food gather हबो? पानी टा जो या भीतर को पसुछ केमती पसला? On the inner lining of the spongosil. Spongosil रो inner lining रे किछि special kind of cells are present. Some
special kind of cells present containing what? Cilia. I am sorry guys, containing flagella. These are the flagellated cells present on the inner lining of spongiocele, and such unique cells are called as collar cells or the choanocyte cells. These cells are called as collar cell. Collar cell বা ତାକୁ କ'ଣ କହିବ, or these are called as choanocyte. Collar cell or the choanocyte cells. So let me remove this part for you. See, these collar cells are also called as what? Choanocytes. Choanocyte. Okay, fine. These specialized cells, they have the flagella. When this flagella will beat, so it will produce the water current. So flagella ଯେତେବେଳେ beating କରିବ, movement କରିବ, ଗୋଟେ water current produce ହେବ, so that the water will enter into the spongiocele. So ଏଇଠି ମନେକର ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ଗାତ ଆମେ ଖୋଳି ଦେଇଛୁ, ଖାଲଟା ପାଣି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ପାଣି ମୁଭ୍ କରୁନି, ସ୍ଥିର ଅଛି। ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ବସିକି ପାଣି ଟିକେ ବାହିବ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ, ଦ ୱାଟର ୱିଲ୍ ଫ୍ଲୋ। ଘର ଭିତରେ ପାଣି ହେଲେ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ଟିକେ ଝାଟି ଦେଉ, ଝାଟି ଦେଲେ ପାଣିଟା ଟିକେ ବହିବ, ମାନେ ସବୁ ପାଣି ସେଠି ପଳେଇବ। ସୋ ୱାଟର କରେଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ସୋ ୟା ଭିତରେ ୱାଟର କରେଣ୍ଟ କିଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଲା? କଲାର ସେଲ୍ସ। ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଆମେ ଲେଖିବା, ଫୁଡ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂରେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା। On the inner side of spongiocele, inner side of spongiocele, specialized flagellated cells called as collar cells or choanocyte present. Choanocyte present. How? Choanocyte cells or collar cells are present on the inner linings of the spongiocele. Now, what is about the functioning of these collar cells? The collar cells working mechanism केमती, तार functioning केमती? When this flagella will beat, so it produce water current inside the spongiocele. It will create a current or the driving force, so that water will move. Okay, so there is the driving force. Next point. देखो, due to beating of flagella, water current is produced. Water current is produced. Okay. Hence, water enters into spongiocele. Spongiocele. स्पंजोसेल भितर को पानी पशिब, तो ये जो फ्लाजेला बीट कला पानी ता भीतर को पशिला, से फ्लाजेला फिल्टर करदेव, न्यूट्रिएंट टाको से फूड टाको धरी नब, ट्रैप कर नब, पानी टाको छाड़ दब, पानी टा द्वारा पड़े। सो इट विल फिल्टर द फूड फ्रॉम द वाटर। ओके, नेक्स्ट फंक्शन, so it will filter the food
and waters are moving from the scrotum. तो जेहेतु वाटर रे थिबा फूड को फिल्टर करिक खाऊँ से स्पंजेस को फिल्टर फीडर मध्य कहा जाए. Hence these are called as, hence the sponges, these are called as filter feeder. Called as what? Filter feeder. They will filter the food and feed the food. Filter feeder. Okay. So प्रथम कतरा बुझी गला बुझ पाला नहीं. कैनाल सिस्टम रो प्रथम काम वाला फूड गैदरिंग. सेकंड काम देखिबा नेक्स्ट फंक्शन इज gas exchange. Gas exchange. So sponges do not have special respiratory structure. हमर जेमते लंग्स अछि, फॉस्फोरस अछि, हम श्वासक्रिया करूछु, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन नहीं करी कार्बन डाइऑक्साइड छाडुछु, तो आंकर सिमती स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर किछ नै. सो डायरेक्टली जो सेल मेम्ब्रेन थ्रू रे ऑक्सीजन आसीबो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो. ऑक्सीजन टा कोड आसीबो फ्रॉम द सी वाटर. पानी रे जो द्रवीभूत अवस्था रे जो अम्लजानटा अछि सेटा आ भीतर को जीवो. तो पानी गले सिना ऑक्सीजन जीवो, तो पानी केमती जीवो? थ्रू द कैनाल सिस्टम. कैनाल सिस्टम रे गैसियस एक्सचेंज हबो. ओके, तो हमें कहि परिबा एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स, gases occurs through plasma membrane of each cell. कुसो झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ each cell. प्रत्येक सेल रे थिबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोटे गोटे रेस्पिरेटरी सरफेस तांकर थ्रू रे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जीवो. बुझियला. आउ कौन कैनाल सिस्टम रो काम? रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, फूड गैदरिंग, गैस एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. वेस्ट रिमूवल आउ गोटे फंक्शन लिखि परिबा हमें वेस्ट रिमूवल हैला. ते माने कौन टा निर्गत करंती? जो नाइट्रोजन वाला वेस्ट मटेरियल अमोनिया रिलीज करंती माने. दे एक्सक्रेट अमोनिया फ्रॉम देयर बॉडी. They excrete ammonia ର ସଂକେତ କ'ଣ? NH3. ଏଟା they excrete ammonia from their body. तो माने कौन एक्सक्रेट करिवे? अमोनिया रेचन करिवे. बुझिगला. कैनाल सिस्टम रो काम food gathering, gas exchange as well as removal of the waste material from the body. बुझी पारिबे समझते. This is all about the canal system. Next function, digestion in sponges. Digestion in sponges is intracellular. It is intracellular, that is it occurs inside the cell. सेल भितरे जदि डाइजेशन हुए ताको इंट्रासेलुलर कहा जाए. Digestion is intracellular one. So next concept देखिवा intracellular digestion. Respiration is by the plasma membrane. Next concept. तांकर locomotion तो ही पारी बनी. These are sessile. They are attached to the substratum. Okay.
These are sessile. They are attached to substratum. अच्छा स्केलेटल सिस्टम केमती आंकर रहिबो सपोर्ट किए दबा को skeletal system or support system, their body wall having a skeleton that is called as spicules or the spongin fibers. They have the skeletal system, skeleton तो नुह skeletal system बा support system जाको हमें कहूचे support system that is spicules. Spicules टा कोथरे तैयारी कैल्शियम कार्बोनेट रे तैयारी calcareous. This is calcareous spicules or spongin fibers. Spongin fibers are made up of spongin protein. Made up of spongin protein रे तैयारी तांका बॉडी को सपोर्ट कोडो मिलुछ. They have calcareous endoskeleton or they have the spongin fibers. बुझिएला. Next point, the sponges. The skeletal system is there, support system is there, digestion is completed, respiration is completed. Then come to the reproduction in sponges. How do the sponge will reproduce? Okay, how do a sponge will reproduce? Reproduction it is by two methods. दुईटा methods अछि. Number one, asexual method. Asexual method रे कौन हबो by fragmentation हे पारे गुटे मेथड. आउ गुटे मेथड हला internal body है. फ्रागमेंटेशन माने कौन विखंडन प्रक्रिया. जदि गोटे स्पंजेस थाए जदि कटि जाए यहाँ गोटे गोटे चकटा गोटे स्पंजेस अच्छी यहाँ खंड हो गला. ये जो दीटा खंड अच्छी each fragment will develop into a new sponges. So here fragment भी गोटे नुआ स्पंज हो ये फ्रागमेंट भी गोटे नुआ स्पंजेस हो. This is called as fragmentation. आउ गोटे कौन अच्छे इंटरनल बॉडी. स्पंज भितर तार जो स्पंजोसिल अच्छे आम देखिले ता भितर किसी बर्ड फॉर्मेशन हम कोरक उद्गम जाक कहुए बर्ड ना. एक्सटर्नल बॉडिंग तुम हाइड्रा रे जानी थी केमती तार एक्सटर्नल बर्ड फॉर्मेशन हुए. इंटरनल बर्डटा कौटी हुए स्पंज भितर हुए. इंटरनल बॉडिंग internal budding रे आउ गोटे ना अछि gemulations. Internal budding is also called as gemulation. Internal budding is also called as gemulation. And these gemules are what? Internal bud. Gemules are what? Internal bud. तार भितरे जो बॉड फॉर्मेशन हम ताको कोन इंटरनल बॉर्डर गेम्यूल्स. बाहर बॉर्डर एक्सटर्नल बॉर्डर गेमा. कॉन्सेप्ट बुझे कि नहीं. एसेक्सुअल मेथड दिस पार्ट इज क्लियर. तापर हम देखिबा सेक्सुअल मेथड केमती हो. स्पंजेस आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल मेथड. तांकर सेक्सुअल मेथड भी अछि.
सेक्सुअल मेथड देखिबा केमिति का होउछ सेक्सुअल मेथड इन द सेक्सुअल मेथड गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड प्रथम कथा हला स्पंज मानकर मेल फीमेल स्पंज सेमती किछि न थाए तो गोटे सिंगल स्पंज भितर मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट sexes are not separate here sexes are not separate ताको से टर्म टाको कौन कहती हार्माफ्रोडाइट बा बाइसेक्सुअल कही पारिबो टर्म मन रख hermaphrodite bisexual that means male and female sex organ male and female sex organ present inside same organism present inside same organism so a single organism with a male sex organ female sex organ both sex organs are present hence it is said to be bisexual ताल जते बळे गैमेट प्रोडक्शन हबो जुग्मक तयारी वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तो गोटे सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करिवो दुई टाइप रो गैमेट यस हियर मेल एंड female gamete are produced by same individual so male female gamete दुईटा जाक gamete single individual टे produce करिवो ठीक अछि next concept is देखिबा फर्टिलाइजेशन डार कोठी हेबो इनसाइड द फीमेल बॉडी और आउटसाइड द बॉडी यहाँ फर्टिलाइजेशन कौन हुए समायन प्रक्रिया इंटरनल मेल एंड फीमेल गैमेट विल फ्यूज इनसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल fertilization is internal fertilization is internal ता माने कौन फ्यूजन ऑफ male and female gamete fusion of male and female gamete occurs inside the body of individual inside the body of individual सेम इंडिविजुअल रो बॉडी भीतर जदि फर्टिलाइजेशन हुए ताको कोन इंटरनल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट केमिति का हबो व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट माने कौन फर्टिलाइजेशन हो सारा पर समायन प्रक्रिया समाप्त हो सारा पर जो स्ट्रक्चर टी प्रोडक्शन में जहाँ जुग्मज बोली कह जाए जाइगोट कह जाए से जाइगोटा डेभलप होकर एम्ब्रियो हुए से जो डेवलपमेंट डायरेक्ट अच्छी इनडायरेक्ट अच्छी डायरेक्ट मैंने डायरेक्टली से यंग वन्स तैयारी कर यंग वन्स लुक सिमिलर टू द पेरेंट्स गोटे ह्यूमन बेबीटा को देख से गोटे ह्यूमन भाया देखा जाए बट फ्रग देख एम्फिबियंस को देख तार जो छोट एम्फिबियंस गोटे टेडपुल लार्भा आम कौच से फ्रग भाया देखा जाए कि नहीं मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फ्रग तो से डेवलप होकर एडल्ट फ्रग को कन्वर्ट हो
तो जो मानकर डेवलपमेंट रे मझिरे गोटे लार्भाल स्टेज आसी जाए सेटा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट विदाउट लार्वा द डायरेक्ट डेवलपमेंट हियर द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट through a larval stage through a larval stage larva से कल माने development is indirect clear next come to examples of the sponges examples of phylum Porifera किछि examples नहीं जेबा examples रसला Cycon commonly called as Scypha Euspongia एटा कण बेथ स्पंज आ गोटे अच्छी स्पंजिला स्पंजिलाटा फ्रेश वाटर स्पंज स्पंजिला इज फ्रेश वाटर स्पंज जोटा यूज स्पंज ये अच्छी बेथ स्पंज कौच गाधेला बेले बाथरूम रे जो स्पंज थाए कि सेटा गोटे ऑर्गेनिज्म यूज स्पंजिया तो एबे जो स्पंज आम यूज करूँ यहाँ गोटे सिंथेटिक स्पंज बट आगुरी स्पंज गुड़ाक ये स्पंज बॉडी तैयारी होता है बॉडी तो स्पंज तो एत मात्रा आम कौट पाइबा से कंपनी सब तैयारी गला आर्टिफिशियली वी हैव डिजाइन द फॉर्म है दिस आर फॉर्म ओनली एंड वन मोर एग्जांपल दैट इज यूप्लैक्टेला यूप्लैक्टेला or it is called as Venus flower basket. So it is used as a bridal gift in Japan. जापान रे कौन करती ये जो यूप्लैक्टेला स्पंज अच्छी कपल मान को गिफ्ट करती ब्राइडल गिफ्ट पैक माने जो रिसेप्शन पार्टी रे मैरेज पार्टी रे जाइकरी आमे जो गिफ्ट दउचु फ्लावर बुके दउचु से जगह से मन कोन करंती गोटे स्पंज टाको दियन एडके बडटा थिबो वेनस फ्लावर बास्केट ताको गंदी फ्लावर बास्केट इन जापान विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ कहि करे सेटा दे दियन गिफ्ट रहस्य कोन पई गोटे स्पंजेस टाको दिया जाय टू द न्यूली मैरिड कपल तो ये जो स्पंज अछि द वेनस फ्लावर बास्केट ऑफ द यूप्लैक्टेला एटा गोटे एमिति का स्पंज स्पंज तो या भितर कौन होती दुटा इनसेक्ट आर्थ्रोपोडा फाइलम दुटा श्रिम्प बोले गोटे इनसेक्ट अच्छे श्रिम्प तार मेल फीमेल या भितर पशि जाती पशिकी लक हो जाती कैद हो जाती या भितर एंड दे विल डाई इनसाइड द यूप्लैक्टेला तो इट इज ए सिंबल ऑफ लव मेल एंड फीमेल प्रेजेंट इनसाइड द स्पंजेस टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ देयर लाइफ बुझे से तारी भितर ही रहीकि मेल फीमेल श्रिम्पटा मरी जाती दबार उद्देश्य कपल को तुम्हें भी जीवन के अलग हुए लिव टुगेदर थ्रू आउट योर लाइफ डोंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड टेक दिस गिफ्ट बुझे दैट इज व्हाई इन जापान इट इज यूज्ड एज द ब्राइडल गिफ्ट टू द न्यूली मैरिड कपल एंड द एनिमल इज यूप्लैक्टेला commonly called as Venus flower basket. Please note down. So I will give you some questions. लिखो क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट आर द components of canal system रा कौन कंपोनेंट अच्छी
Number 2, which animal is called as Venus flower basket? Number 3, the incoming pore in sponges are called as dash. Question number 4, digestion in sponges is dash type. Dash माने इंट्रासेलुलर बा एक्स्ट्रासेलुलर लिखियो. क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन लिखियो which cell नहीं what is the composition of spicules? What is the composition of spicules? Spicules रा कौन composition हवा लिखिकी पठाओ. इतनी करो. यदि बुझी पारन किसी डाउट अच्छी तेल हाथ ऊपर को टेको.